A day after West Bengal's Chief Minister Mamata Banerjee made scathing remarks on the stampede at the Maha Kumbh Mela, Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath has hit back. Yogi did not mince his words when he said that social media handles of the Samajwadi Party used language which any civilized society would not use. Lalu Yadav called the Kumbh Faltu. Another partner of the Samajwadi Party said the Maha Kumbh has become the Mrityu Kumbh. मृत्यु कुंभ में बदल गया। अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू का कुंभ है, यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। Without taking Akhilesh Yadav's name, Yogi Adityanath hit back at the Samajwadi Party chief for opposing the Maha Kumbh but quietly going and taking a holy dip. कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हो। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। Speaking in the Uttar Pradesh State Assembly, Chief Minister Yogi Adityanath said that the opposition has been trying to undermine the grand event. He called Maha Kumbh a socio-religious event and not a political one. Yogi accused that those who have no understanding of the magnitude of the event criticize it plainly because it suits them. हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा
And now we have my colleague Vipin Chaube joining us live, and he is with an MP of the Samajwadi Party. Vipin ji, all yours. ये चुनाव क्वेश भी हो जाएगा और लोगों पर प्लास्टिक हो जाएगा। आज बिल्कुल देखिए, एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष महाकुंभ के पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर रहा था और हर सवाल का जवाब आज लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे तक विधानसभा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। अवधेश जी, बहुत मेहनत की आप लोगों ने मिल्कीपुर में महाकुंभ पर, बहुत सवाल खड़े किए, लगातार आप लोग सोशल मीडिया से बीजेपी और पूरी सरकार पर हमला बोलते रहे और आज हर सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया, ना सिर्फ आपको, देश की जनता को और पूरे विपक्ष को। यह जवाब कितना सहमत करता है आपको और इन जवाबों पर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है, माननीय योगी बाबा ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं, इनका इतिहास लिखा जाएगा। आज नहीं कल से बोले हैं, जो भी भाषा बोले हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, इस तरह की विचारधारा, इस तरह की अभिव्यक्ति, इस तरह का भाषण किसी योगी, संत, साधु की विचारधारा नहीं हो सकती। इस तरह की विचारधारा, इस तरह का भाषण उत्तर प्रदेश, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृत है, देश के 6 प्राइम मिनिस्टर दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, एक इसका गौरवशाली इतिहास। नहीं, आप जवाबों से संतुष्ट हैं कि नहीं, ये बताइए, कितने संतुष्ट हैं? ये जवाब पूरी तरह से निरर्थक है और वो डिस्टर्ब हैं, डिस्टर्ब समझते हैं, उनका मस्तिष्क इससे काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि महाकुंभ में पूरी तरह से फेल रहे हैं। चारों तरफ से ये हो रहा है, कितने मरे, इतने मरे, सवाल पूछा जा रहा है, कितने मरे, आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, जानकारी नहीं आंकड़ा आज दिया और बताया कि 29 मरे, 36 घायल हैं। नहीं, सारे आंकड़े उन्होंने दिया, सब झूठे आंकड़े हैं, फर्जी आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़ों पर आपको भरोसा है कि नहीं है? नहीं, हमें सरकार में तो भरोसा नहीं है यार। आंकड़ा कौन है? आंकड़ा तो जोन कहा तो आंकड़ा तो ये इससे पता लगा लो। मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है 88%, 89%। आप चले जाओ, 5% भी आदमी नहीं मिलेगा, वो कहेगा कि जनता ने वोट दिया है। वोट दिया है पीठासीन अधिकारी पर, वोट दिया है सीओ ने, वोट मारा दरोगा ने, वोट मारा एडिशनल एसपी ग्रामीण ने, ये सरकारी लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 500 गुंडे आए थे, उन्होंने, हमारे पास सबूत है। अरे बहुत अच्छे पीठासीन अधिकारी हैं, हम तो अभी वोट डाल रहे हैं, 6 वोट हमने डाला, एक कह रहा मैं 18 वोट डाला है, और एक वोट डालते हुए पकड़ा गया, दूसरे क्षेत्र का था, हैदराबाद का। लोग कह रहे हैं आप हार जाते हैं तो फिर मिल्कीपुर हार गए तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, अयोध्या जीतते तो सवाल नहीं खड़े करते, कानपुर जीतते तो सवाल नहीं खड़े करते। सुनिए, मैं हारा नहीं हूं, योगी बाबा की सरकार हारी है, नाक रगड़ डाला है, नाक रगड़ डाला है, 9 बार गए हैं, 16 मंत्री लगे रहे हैं, 46 विधायक रहे हैं। उनको जब पता चला कि हमारी जमानत जब्त हो जाए, तो उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिताओ, नाक का सवाल है, नहीं तो नौकरी तुम्हारे खतरे में है। मान लिया आपकी बात को, लेकिन महाकुंभ पर वापस लौटते हैं। महाकुंभ पर आपने तमाम सवाल उठाए, मरने वालों के आंकड़े पर, व्यवस्था पर, दिव्य और भव्य महाकुंभ पर सवाल उठाए, उन सभी सवालों का जवाब दिया और एक एक करके बिंदुवार जवाब दिया। समाजवादी पार्टी सहमत है या नहीं? हमारी बात सुनो, ये महाकुंभ कोई नया पर्व नहीं है, हजारों साल का है और हजारों साल तक चलेगा, हजारों साल चलेगा। इसकी एक महिमा है, परंपरा है। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे 3 बार, हम उनके साथ मंत्री थे। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ। इतना शानदार आयोजन हुआ है कि एक चिड़िया तक नहीं दबी, चिड़िया तक नहीं दबी है। देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। आज योगी बाबा ने पूरे देश में डंका पीटा और न जाने कितने लोग मरे हैं, कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है। कह तो रहे कि 30 मरे, झूठा आंकड़ा, फर्जी है, तथ्यों से परे है, तथ्यों से परे है। लेकिन योगी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ कि भगदड़ हुई है। आप 56 की बात करिए, 74 की बात करिए, 76 की बात करिए, उस जमाने में 800 लोग मारे गए, तब आप लोगों ने सवाल नहीं खड़े किए। आज 30 लोग मारे जा रहे हैं तो सवाल खड़े कर रहे हैं आप। आज कितने लोग मरे, कितने दबे हैं,
उसका कोई आंकड़े नहीं है योगी जी के पास। ये परेशानी का सबब है और देश के लोग ये कह रहे हैं कि योगी बाबा की सरकार ने, इनकी व्यवस्था ने महाकुंभ को कलंकित किया है। ये कलंक हमेशा हमेशा इनके ऊपर रहेगा, जिसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। इतिहास इनका काले अक्षरों में लिखेगा। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो जब आप लोगों ने कुंभ कराया, आप लोगों ने पैसा ही नहीं खर्चा किया, काम 50% नहीं हुआ, पैसा सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था पूरा कुंभ। केंद्र सरकार के पैसे से आपने कुंभ कराया, राज्य सरकार ने पैसा खर्चा नहीं किया। ऐसा है, हमारी सरकार में 4 बार महाकुंभ हुआ है, हमने पहले बता दिया। माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे, आज दुनिया में नहीं है, श्री मुलायम सिंह जी और एक अखिलेश जी, हम तो मंत्री रहे सब में। एक चिड़िया भी नहीं दबी और सारे देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। आज देश दुनिया के लोग। That is Vipin Chaubey in conversation with Samajwadi Party MP Avdesh Sharma. Samajwadi Party not happy with the response provided by Chief Minister Yogi Adityanath to all the questions they've raised about the stampede at the Maha Kumbh Mela. Now, addressing the Maha Kumbh stampede incident, which led to the loss of 30 lives, Chief Minister Yogi expressed his sympathies for the victims and their families while criticizing attempts to politicize the tragedies. प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपने नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है। Taking on those who have been criticizing the Uttar Pradesh state government, Yogi Adityanath said that the Maha Kumbh is not organized by any particular party or organization and people are participating in huge numbers while ignoring all the false campaigns. ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। The Chief Minister of Uttar Pradesh has also refuted a report that said fecal bacteria present in water at many places at the Maha Kumbh did not meet the criteria of water fit for bathing. Shifting focus away from Uttar Pradesh to Karnataka, where Chief Minister Siddaramaiah has been given a clean chit in the MUDA case, with the Lokayukta finding no evidence against him. The report states that neither the Chief Minister nor his family members were involved in any irregularities. Along with Chief Minister Siddaramaiah, his wife Parvathi and Bombai's Mallikarjun Swamy have also been cleared of all charges. The Lokayukta has now issued a notice to complainant Snehamai Krishna, stating that the allegations could not be proven due to a lack of evidence. The report suggests that if Snehamai wishes to challenge the findings, he should approach the court. Finally, big relief coming in for Karnataka Chief Minister Siddaramaiah in the Mysuru Urban Development Authority or MUDA case, where there were serious allegations of financial irregularities by him and his wife Parvathi. Now he's been given a clean chit by the anti-corruption body Lokayukta, which found no evidence against him, and not just him, it had no
It said it had no evidence against any irregularities committed by his family members as well. And now, the Lokayukta has issued a notice to the complainant in question, which is Snehamai Krishna, and has told the complainant that if he wishes to challenge the findings of the Lokayukta, then he should approach the court. After weeks of allegations being tossed at Chief Minister Siddaramaiah, finally the Lokayukta giving him a clean chit as no evidence has been found against him in the Mysuru Urban Development Authority case. We have my colleague Vajjiula now joining us on the phone. And Vajji, talk to us. Big relief for Siddaramaiah. Exactly, Krishna. This is a big relief, and this comes right after the Lokayukta report that we had broken a few months back, where they had already given a clean sheet. But today what they've done is they've written to the petitioner, which is Snehamai Krishna, saying that they have not found anything in the MUDA case, and it's somewhere a clean sheet for Siddaramaiah. So if he wants to appeal and go further and take the investigation further, then he can go to a court. So that is what has happened today. But this coming from the Lokayukta, it was submitted to the IG. And then the police had also done its own verification, and that is where it has now come out that it's a clean sheet from the Lokayukta's end. So this is a big relief. Now it remains to be seen whether Snehamai Krishna will opt to go to the Supreme Court, will opt to go somewhere else to see whether he can make sure that CBI can intervene, because in the previous court session, the court had also denied the entry of CBI in the entire matter, and it said that the Lokayukta body is investigating the matter, which is also an autonomous body. While that is happening, we will not allow any other body to investigate. So it now remains to be seen how the petitioner will move it forward. But on the side of Siddaramaiah, he, his wife, and the brother-in-law, all of them have got relief. So it's a great day for him for today. That's right, Vajji. It's been weeks, if not months, of allegations being thrown at Chief Minister Siddaramaiah, and as many purported evidence was also was presented, implicating him. Possibly implicating him, but now this is definitive, isn't it? To post this, talk to us. What are the chances that Siddaramaiah will have to come clean in the court? Well, right now, the Lokayukta has already made it clear whether there is no involvement, because in the report that we had broken a few days back, in that it had mentioned how there is a role of the officials of the MUDA involved in the entire matter, but Siddaramaiah per se has not been has no role in this entire thing. Though the petitioner had also said that there could be a role of influence, because he's a high-profile leader, he was a former chief minister, but that could not be proved in the court right now. Now the hearing still continues in this entire matter. The IG will now submit, the ADGP and the IG will submit the report to the court, and it now remains to be seen how the court will evaluate this entire report, and that is when we'll get a further idea on how what happens with Siddaramaiah. Vajji, they're getting us the latest from Bengaluru. Thank you, Vajji, for joining us. Delhi is all set to welcome its new Chief Minister, with the swearing-in ceremony scheduled for 11:30 a.m. on the 20th of February. After a key BJP parliamentary board meeting, the party has appointed Ravi, Shankar, Prasad and Om Prakash Dhankhar as central observers for Delhi. The final decision on Delhi's new Chief Minister will be taken by BJP's central observers. Meanwhile, BJP's legislature party meeting is set for 5 p.m. today at the Delhi BJP office, where key discussions will take place. Invitations for the swearing-in ceremony have been sent to Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, former Chief Minister Atishi and Congress Party leader Devendra Yadav, among others. Soon after taking the oath, NDA Chief Ministers, Deputy Chief Ministers and senior leaders will come together for a joint lunch. Both the Chief Minister and Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh will also reach Delhi tonight and attend tomorrow's ceremony. Meanwhile, a traffic advisory has been issued for the 20th of February, as several VVIPs and a large gathering are expected at the Ramleela grounds for the oath-taking event. Delhi police has imposed traffic restrictions to ensure smooth movement in the national capital.
commuters have been advised to plan accordingly. My colleague Deepak Bhadana spoke with Praveen Khandelwal on Delhi's next Chief Minister and BJP's top agenda. Take a look. In just a few hours, we'll know who the next Delhi CM will be. With us, we have the BJP MLA from Chandni Chowk, Mr. Praveen Khandelwal. Sir, अभी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ जाएगी. आप मुझे बताइए कि सीएम पहले तो मुझे ये बताइए इस डबल इंजन सरकार का दिल्ली में नेतृत्व कौन करने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेता है, तो सही समय पर सही निर्णय होगा और भाजपा का मुख्यमंत्री दिल्ली में कल शपथ लेगा. देखिए, ये तो आपने थोड़ा घुमा फिरा के मुझे बताया. ये लोग कई उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं. क्या कोई डार्क हॉर्स है लाइन में? देखिए, ये सब चीज़ें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है. कुछ चीज़ें हमें उन पर भी छोड़नी चाहिए. देखिए, अभी जब भाजपा यहाँ पे आई है 27 साल बाद और उसने कई वादे किए हैं, आप मुझे ये बताइए इन वादों में सबसे पहली प्राथमिकता, जैसे अभी यमुना के ऊपर भी बात हो रही है. हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र के हर संकल्प को हम पूरा करेंगे. ये हमारा संकल्प है. मुझे मेरा आखिरी सवाल सर, एक बीजेपी आम कार्यकर्ता के तरफ से या एक जो आम नागरिक है दिल्ली का, उसके लिए आप अगले 5 साल किस तरीके के? मैं केवल ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो. शाम को 7 बजे का निमंत्रण है. पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे. उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे. आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बता दीजिए कि क्या प्रिपरेशन है जी? कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है. माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा. कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने. और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है. Shocking act of hooliganism. A man rammed his vehicle into 8 people at a housing society in MUDA Road in Mumbai. In the latest, what we're learning is that the 3 accused first hit a bike in NL complex of Dhankhar West. At the time of the collision, 3 people were also standing over there. After that incident, they went to MUDA Road and rammed into 8 security guards. The accused have been booked for attempted murder under BNS 109 and Arms Act sections 3 and 25. What's more shocking is that one of the accused, Kashish Gupta, already has previous cases registered against him under the POCSO Act and narcotics laws. A TV9 reporter also tried to speak to the accused, but he did not respond and remained surrounded by police security. Let's tell you what exactly transpired. The shocking incident took place after the society gate was not opened for the vehicle as it was not registered with the residential society. Following that, the driver rammed his vehicle into people, critically injuring 3 security guards. The driver and his accomplices then resorted to violence. The car driver has been identified as Kashish Gupta, with his accomplice Akshit Gupta and a third unidentified person also present in the black SUV involved in the attack. The police have registered an FIR against the accused. According to eyewitnesses, the incident happened at around 6:30 a.m. on Tuesday. The accused were allegedly carrying a country-made pistol, which they used to threaten security guards. The accused were believed to be heavily intoxicated and reportedly boasted about their connections in Ghaziabad in UP. One of the injured security guards said they had simply asked the accused for the flat number they wanted to visit. In response, the car driver began abusing the guards and issuing threats. Suddenly, the driver accelerated the vehicle, ramming it into 10 to 12 people standing nearby. The driver kept moving forward and reversing at full speed, attempting to run over people multiple times. Seven students of a government college in Thiruvananthapuram in Kerala were suspended for assaulting a first-year student. This followed a complaint filed by the victim with the principal of the college. 6 of the accused are third-year students, while the 7th one is a second-year student. Meanwhile, police has also booked the 7 students on charges of alleged ragging.
വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പോലീസ് എഫ്ഐആർ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല വേറെ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അവൻ അവിടെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇതുവരെ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോലീസിന്റെ അടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In his complaint, the victim said that the senior students ambushed him and brutally beat him up in a room. Reportedly, prior to the assault, there were some clashes between seniors and juniors on campus for ragging. In his complaint, the student also said that he was forced to remain on his knees, beaten up and made to drink water after seniors spat in it. സംഭവിച്ചത് സ്കൂളിൽ വെച്ചുള്ള സംഭവമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വിഷയം, വേറൊന്നുമില്ല. അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ അടിയായി ആ ഒരു വിഷയമാണ്. അത് പിന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് മാറിയതാണ്. പിന്നെ അവന് ശരിക്കും റാഗിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപദ്രവിക്കുകയുണ്ടായി, നല്ല രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചു. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കാരണം രാവിലെ വന്നതാണ്, അതാണ് മൊഴി കൊടുത്തു. ആ മൊഴി എടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. The anti-ragging cell of the college conducted an inquiry and concluded that the victim was indeed subjected to ragging. They came to this conclusion after going through CCTV footage and recording statements of other students. The college principal alerted the police that ragging indeed took place, following which additional charges have been leveled against the senior students. The Fees and Exchange Commission has requested assistance from Indian authorities in its investigation of Adani Group founder Gautam Adani and his nephew Sagar Adani over alleged securities fraud and a $265 million bribery scheme. The SEC, or Securities and Exchange Commission of the US, told a New York district court that its efforts to serve its complaint to Gautam and Sagar Adani were ongoing and that it's seeking help from India's Ministry of Law and Justice to serve its complaint to Gautam and Sagar Adani. Last year, federal prosecutors in Brooklyn unsealed an indictment accusing Adani of bribing Indian officials to convince them to buy electricity produced by Adani Green Energy, a subsidiary of his Adani conglomerate, and then misleading US investors by providing reassuring information about the company's anti-corruption practices. US President Donald Trump asked the purpose behind providing $21 million to India for voter turnout and said that the country is one of the highest taxing countries in the world. Now, this came after Elon Musk-led Department of Government Efficiency disclosed that US aid contributed $21 million to EC allegedly for boosting voter turnout. Why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about, like, voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did $500 million, didn't we? It's called the lockboxes. In a shift from past policy, the Trump administration has agreed to further talks with Russia on ending the war in Ukraine without Ukraine at the table. The move marks a departure from Washington's previous approach, which focused on rallying allies to isolate Vladimir Putin. US President Donald Trump has appeared to suggest Ukraine was to blame for Russia's invasion in 2022 and argued Kyiv could have stopped the war with negotiation. He made those remarks Tuesday in Mar-a-Lago, the same day of US-Russian talks in Saudi Arabia to end the war in Ukraine, talks where Ukraine was not present. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Ukraine was invaded by Russia in a full-scale assault in February 2022,
in what's become the deadliest conflict in Europe since World War II. On Tuesday, Trump took swipes at Kyiv, saying they should have held talks much earlier. A half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side. As for the talks, Trump said he was more confident after them and that he may meet with Russian President Vladimir Putin before the end of the month. He also said Ukraine should hold elections to potentially replace President Volodymyr Zelensky, whose term was supposed to end last year. Polls are banned under martial law in Ukraine, which has been in effect since Russia's invasion. Zelensky postponed his own trip to Saudi Arabia set for this week. Sources say the decision was made to avoid giving legitimacy to the US-Russia talks. The official stance in Kyiv is that talks on how to end the war should not be held behind Ukraine's back. The Tuesday meeting in Saudi Arabia saw Russia harden its demands, saying NATO should abandon its 2008 promise to grant Ukraine membership at a future unspecified date. Moscow also said it would not accept any NATO troop presence in Ukraine. Leaders in Ukraine and Europe are worried Trump and Putin could cut a quick deal that rewards Moscow for its invasion. European politicians have accused Trump of handing out concessions to Russia for free even before talks began, since he's ruled out Ukraine's NATO membership and said it was an illusion Kyiv could win back territory now under Russian control. Secretary of State Marco Rubio said on Tuesday the European Union needed to be involved in peace talks at some point, and any solution must be acceptable to all parties. Heavy snow hit Japan as a cold front brought more wintry weather to the country's central regions. In Niigata Prefecture, parts of which have already seen over 3 meters or 10 feet of snow this winter, roads and buildings were blanketed by heavy snow yet again. Japan's Met Agency issued a heavy snow advisory on Wednesday morning, predicting that up to 70 centimeters or 28 inches of snow could fall within 24 hours in areas along the Sea of Japan's coast. The winter weather is expected to peak on Wednesday before temperatures rise next week.